Okay, next is question number 6. Ji Abdullah पढ़े question number 6. G sir, question number 6. The foundations that support a building are long concrete cylinders that are pointed at one end. A pile driver is a machine that forces the pointed concrete cylinders into the ground. Figure shows a pile driver. Actually, a heavy block pile driver concrete cylinder. A heavy block of mass 2.9 multiplied by 10 to the power 4 kilograms is lifted into the air and then dropped onto the top of the concrete cylinder. Yes. This forces the cylinder into the ground. ये block का dimensions है. The block is 2 meters tall and has a cross-sectional area of 1.8. Calculate the density. So सबसे पहले volume find कर लेंगे Density, इसका. density is mass over Volume. volume. पहले volume और फिर उसको density का formula में डाल देंगे. तो ऐसे करते हैं density equals mass over volume and mass is already I think given is 2.9 10 raised to power 4. Yes sir. 2.9 10 raised to power 4 and the volume is length width height. Okay, जी. या ऐसे करते हैं कि height into area is also the volume. 1.8 into 2. चेक करें क्या आता है आंसर. 3.6. 3.6. आंसर चेक कर लें इसका. 3.6 तो नहीं होगा. क्यों? ओवरऑल आंसर by dividing by 2.9 10 is to. अच्छा अच्छा ये नहीं किया मैंने. मैंने सब 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया था. Power 4 over 3.6. 8055. 8055. Okay. 0.555. 8055.55. This is 8.1. 8.1 जी 10 raised to power 1 2 3. 10 raised to power 3. Okay. जी. And the unit of density is Mass kilogram per meter cube. kg per meter cube. Next is the pile driver lift the block from the top of the concrete cylinder to a height is given. 0.8. The gravitational field strength is given. Calculate the जी. gravitational potential So energy gained mgh. by the block. So gravitational potential energy gained by block is mgh. Mass is ऊपर था सर. 2.9, I think 10 power है ना? 4. 2.9 10 raised to power 4 multiply by 10 multiply by 0.8. So 232 followed by 3 zeros. 2 uh, 232 then 3 4 zeros. 0 3 0. 3 ड्रॉ किए थे सर आपने. Okay, so जी. this is 2.3 10 raised to power 1 2 3 4 5 5 and joules. Next, the block is then dropped from the rest on the top onto the top of the concrete cylinder. The calculate the speed of the So, block. so change in potential energy is equal to gain in kinetic energy. Loss in Loss in potential potential. energy equals gain in kinetic energy. G. Now, loss in potential is mgh. Gain in kinetic is half mv here. So we just have to find. So m cancel हो जाएगा. So 2gh with square root. So 2g is in this question. Then the height is it given? So height given था ऊपर. Height 0.80.
चेक करें। 4. 4 is the answer. Just 4. जी सर 4.0. 4.0 meter per second is the final answer. Next question जी. number 7. Question number 7. A child's toy consists of a flexible track and a model car. Figure shows a diagram of the toy. The child holds the car stationary at point A, which is 0.45 meters above the horizontal sections of Of what? nature. Sorry. Of track B, C, and FG. The mass of the car is 0.12 kilograms. The child then releases the car, which travels towards point B. Both air resistance and friction between the car and the track are negligible. The gravitational field strength is 10. Calculate the change in gravitational potential energy of the car as it travels from A to B. Where is A? A to B. Okay. So A to B आपने gravitational potential energy find करनी है. The height is given, very simple, mgh. Okay. The G. change in the potential energy equals mg, the height. Now the mass is what? Sir, mass है इसमें given तो था 0.12 kilograms. 0.12. 0.12 g is 10 into G. 0.45. 0.45. चेक करें. G. 0.54. आंसर चेक करें इसका. मैं इसे बुक लेकर आया था एक से. अच्छा सर कल ऑफ है. जी. ठीक है. सर क्वेश्चन कौन से? ठीक है सर. सर क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7. का कौन सा पार्ट? 7 part 1. 0.54. 0.54. Calculate the speed of the car when it reaches B. कैसे करें? सर kinetic energy change in जैसे हमने ऊपर वाला किया इससे पहले वाला. अच्छा. जी सर. कि वही जो ऐसे हमने ऊपर किया ना, जी सर इसको ऐसे ही फिर हम करेंगे. लगाते हैं लॉस इन पोटेंशियल equals gain in Kinetic. kinetic. So loss in potential is already calculated. Gain in kinetic is half. फिर ये कर देते हैं. जी सर. और this would be B equals multiply by 0.54 divided by mass. Mass था 0.12, then square root. जी सर.
इसका आंसर आ रहा है सर, एक सेकंड, एक छोटा सा गलती लिख लिया था, 3 एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 3। तो आंसर जी, इज 3.0 मीटर पर सेकंड। परसेंट। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँ थे नंबर 9 क्लास के लिए। अच्छा, इंटू होता है ना। जी सर, पाकिस्तान का। अच्छा सर, आई थिंक आप एक वो भी डाल सकते हो अपने स्ट्रीम को पे एक स्टिकर साइड पर जिसमें लिखा होगा। अच्छा, हम्म। वो भी करता हूँ। जी। नेक्स्ट इज, after releasing it, the child expects the car to follow the track along the route ABCDFG. In fact, the model car doesn't reach F. Then the model car doesn't reach F. इधर नहीं एफ। आती है. जी Okay. सर। Model car doesn't reach F. Explain in term of energy why the car does not go past E, which is also 0.45 meter above the horizontal track. जी Explain in terms of energy why the car does not go past D, is also 0.45 above the horizontal. D कहाँ पर है? कहते हैं अच्छा D यहाँ पे नहीं पहुंच सकती है कार, इसको पास नहीं करेगी, although it is at 0.45, because सर, some of the सी तक energy, it won't have enough kinetic energy। some of the energy is lost due to the friction between the tire and the track, है ना? जी So then the car have सर, एनर्जी not, लूज कैसे होगा? due to friction between the tire and the track. सर मैंने ऊपर लिखा है एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन इज शुड बी नेग्लिजिबल। Oh, हाँ both जी air resistance and friction between car and, oh, फिर हम क्या लिखें? सर, इसमें यही होगा ना कि it won't have enough kinetic energy to go above that। हाँ, enough kinetic energy नहीं होगी. Good. So the car doesn't have enough kinetic energy. Enough kinetic energy at C. At C, pass beyond the डी। D. Immediately after being released at A, the car travels to B, car travels to C, and then to D. Describe the motion of the car after it reaches D. um, सर ऊपर का ना। अब वो हमें पता है D से आगे तो नहीं जा रही है, तो फिर वो पीछे ही जाएगी. यस सर, डिसेलेरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पीछे की तरफ जा, नो नॉट डीसेलरेट, ओ, ट्रैक क्यों? डाउनवर्ड है ना. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, स्पीड फिर भी इनक्रीज होते जाएगा। It travels back down to C. It travel back to C. Travel back to C and return to A. And return to A. चैप्टर बहुत लेंथी हो गया है, क्या मतलब? बहुत टाइम लग गया इस पे, इतना तो से ज़्यादा ही हो गया ना. जी सर, सर ये वैसे यूनिट 1 ही है लंबा, मेन और इलेक्ट्रिसिटी वाला। हाँ, इसकी देखें स्टिल हैव सर 61 ये तो पेजेस. बहुत लंबा है, ये फ्रेशर वाला है। ओके, चलिए अच्छा है कि शुरू में हो गया, एंड पे होता ना क्वेश्चन मिस हो जाते हैं. हाँ जी। मुझे याद है खतीजा को मैंने ऑपोजिट उल्टा स्टार्ट किया था, फ्रॉम न्यूक्लियर से
ऊपर की तरफ। अच्छा, फिर वो क्यों? हमने, क्योंकि वो खतीजा को एंड वाले शुरू वाले खतीजा कह रही थी कि आते हैं। हम्म। ओके, नेक्स्ट इज figure 2.1 shows a wind turbine. We have wind turbine blades or the wind blows directly towards the turbine with a speed of 12 meter per second. Okay, let's suppose the wind is flowing in this way with a speed of 12 meter per second. In 1 second, 60,000 kg of air passes through the circular area swept out by the blades. Calculate the kinetic energy of this Easy, mass sir. of Half air. mv square. Very good. You first have to write the formula. Okay, sir. Half mv square. Half m is the mass, which is 60,000. Velocity is 12. So the answer is Four, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.32 multiplied by 10 to the power 6. 4.310 raised to power 6. The energy unit होगी 10 raised to power 6. joules. Next is a wind turbine releases no carbon dioxide into the atmosphere while generating electricity. Compared with a coal-fired power station, this is an advantage of using the wind turbine. State one reason why it is important to reduce the amount of carbon dioxide produced. Sir, to reduce global warming. To reduce global Global warming. warming. Reduce global warming. Warming. ये spelling होंगे ना, WARMING. जी, हाँ. sir. Okay. So just one advantage of using coal-fired power station compared with the wind turbine. Sir, sir, more energy would be produced. Cheaper. देखिए ना, विंड तो हर टाइम तो नहीं होती ना. विंड, अच्छा. हाँ, विंड Hmm. not always always blowing. जी. मार्किंग स्कीम ऐसे ही लिखा हुआ था. एंड या अच्छा. इसमें हम कह सकते हैं, और इसके लिए हमें लार्ज एरिया चाहिए, जबकि कोल फायर स्टेशन के लिए स्मॉलर एरिया is required compared with turbine. Next is a coal fire power station releases this much energy of carbon dioxide when it generates this much kilowatt hour of electrical energy है. Define kilowatt hour. क्या होगा? How can you define the kilowatt hour? क्या होता है? The energy, Sir, I need kilowatt hour है ना? हाँ जी, energy Sir, energy used. energy provided या you हाँ, provided in 1 hour. provided for In 1 hour. yeah, energy provided for device, energy provided if power is, if power is 1 kilowatt for 1 hour. की डेफिनेशन देखें क्या लिखी हुई है. आंसर की में लिखा हुआ है amount of energy of a device of power 1 kilowatt used for 1 hour. हाँ वही. ठीक है. Calculate the mass of carbon dioxide saved when the wind turbine has a power output of
this much, 2000 kilowatt, and operate for 12 hours. Calculate the mass of carbon dioxide saved when the wind turbine has a power output of 2000 kilowatt, operate for, अच्छा देखें, 1 kilowatt hour releases 0.96 kg of carbon dioxide. देखते हैं, 1 kilowatt hour, if the power station having a power generating an electrical energy of 1000 watt hour, so it will produce 0.96 kg of carbon dioxide. Now, जी if the wind turbine generating a 2000 kilowatt, वो 1 kilowatt था ना, 1 kilowatt लिख दे. If it is 2000 watt, so this would be, ऊपर वाले को कर देते हैं 1000 watt. 1000 watt पे इतनी एनर्जी मिल, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. And for जी 2000 watt, the carbon dioxide released is X. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000. आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ गया 0.96 2000 over 1000 1.92 1.1.92. जी सर Okay, 1.92. And for 12 hour, अच्छा ये होगा, हाँ, 1.92 मल्टीप्लाई बाय फॉर 12 आवर, क्या करें, क्या आता है आंसर? दिस इज फॉर 12 आवर. 23.04 20.0 पॉइंट. आंसर चेक करें इसका. सी इसका सेकंड पॉइंट 23,000 ओ 20, इतना ज़्यादा डिफरेंस से गलती. सर 1 किलोवाट नहीं वो भी ठीक किया ये है 2000 किलोवाट. ओ, अगर हमने इसको अच्छा हाँ इसको कन्वर्ट नहीं किया ना, हाँ हाँ इसको नहीं किया तो 200,000 बनेगा ये ऐसे करते हैं, तो हाँ इसको कर देते हैं 200,000 में कितने ज़ीरो और आएंगे, अभी 3 ज़ीरो और, ऐसे लिख देते जी क्या, इस तरह कोई को मैं रेस कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 किलोवाट. आई डिडेंट कन्वर्ट द किलोवाट, ठीक है. तो इन डिनोमिनेटर वी जस्ट हैव 1. नाउ अब चेक करें आंसर क्या आता है. आई डिडेंट कन्वर्ट 1 किलोवाट इन 1000 वाट. तो 0.96 मल्टीप्लाई बाय 2000. हम्म अब इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो ना नहीं, पहले मुझे आंसर बता. अच्छा सर 1920 1920 मल्टीप्लाई बाय 12.
1920 multiply by 12. यहाँ आ गया है 23040 40 ठीक है, अब तो सही है। 23,000 बन 3000। आंसर क्या था मुझे? 23,000 ही था ना? जी तो जी सर ये बना है ठीक ट्वेंटी किया थ्री हमने थाउजेंड फोर्टी ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 23,000 2,000 किलोवाट है ना। तो वी जी आई डिडंट कन्वर्ट देम, सो किलो किलो कैंसिल हो। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट इज wind energy is the form of renewable energy. State the name of सर one सोलर जियोथर्मल solar. Next, geothermal, geothermal, हाइड्रो इलेक्ट्रिक tidal, हेलो hydroelectric. हेलो सर जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रहे हैं सर ओके, हाइड्रोइलेक्ट्रिक। और नेक्स्ट इज वेव्स। हाँ वे सर वेव्स टाइटल में नहीं आ जाता नहीं, टाइडल तो होता है जो मून हाँ की वजह से टाइड्स बनती हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ और हाँ वेव्स तो एयर के फ्लो की वजह से भी बन सकती जी है। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। पढ़े? In a coal-fired power station, coal is burnt and electricity energy is produced. State the form of energy in the coal that is transferred to electrical energy. Chemical? State the form of energy in coal that is transferred to the electrical energy. केमिकल ही होगा। जी सर आंसर देख लें इसका। सर इसका हाँ यही है सर केमिकल। केमिकल जी सर केमिकल। नेक्स्ट इज state the principle of conservation of energy. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? principle of conservation of energy that energy is neither created nor destroyed it only changes its forms from one form to another एनर्जी can either be created nor destroyed nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed. It can be it can be transformed from one form to another, one form जी to another. Energy can neither be created nor destroyed. It can be transformed from one form to another, but total energy remain conserved. But total energy remains conserved. From one form to another. Sentence देख लेते हैं. Energy can neither be created nor destroyed. It can be transformed from one form to another, but total energy remains conserved. Okay. जी Next is the quantity of electrical energy produced by the power station is much less than the quantity of energy in the coal that is burned to generate the electricity. Explain why this is so.
जी, quantity of electrical energy produced by power station is much less than the quantity of energy सर in the core. एफिशिएंसी की वजह से आप कह सकते हैं sum of the chemical energy, क्या लिख सकते हैं? Sum of the just want to convert the chemical energy into electrical, but the other chemical is also converted into the other form of energy. Some of the chemical energy is converted किसमें convert होगी? Converted into thermal or light साउंड एटसेट्रा and sound energy. Some of the chemical energy is converted into thermal, light and sound energy, जी and also और क्या लिख सकते हैं? 2 marks का है ना? And also thermal energy is lost to the air. Also thermal energy is lost to the air, air and equipment. कुछ जो equipment होता है वो they absorb the thermal energy. State one environmental consequences of generating electricity in a coal fire power station. One consequences. D. क्या हो सकता है? सर वो ग्रीन हाउस गैसेस would be produced Releases releases carbon dioxide gas, carbide gas या causes global warming. ऐसे ही है. Next, question number 10. Figure 9.1 represent the conversion of energy in a mobile phone. जी अब्दुल्ला पढ़े. जी सर आपका स्क्रीन शेयर हाँ स्टेट ऑफ केमिकल State the the form form of of energy energy stored in the battery, stored in the the chemical energy. Chemical energy. energy Next is state the useful form of output energy from the battery. electrical Electrical is useful in mobile phone. yes sir You are using electrical energy from mobile phone. जी सर electric Oh, current करंट यूज करते हैं मोबाइल light से. लाइट. सर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी तो है ना सर इलेक्ट्रिसिटी ना हो उसमें चले ही ना उससे आप आउटपुट आपको क्या मिलता है? इट्स नॉट द आउटपुट. अच्छा आउटपुट एनर्जी. आप क्या मोबाइल से पंखा सर चलाते हो? आंसर की में वैसे सर इलेक्ट्रिक ही लिखा हुआ है अच्छा, जी सर मेरे लिहाज लाइट नहीं लिखा हुआ. लाइट. लाइट सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जस्ट 1 मिनट. सर फ्रॉम द बैटरी लिखा है ना फ्रॉम द मोबाइल फोन नहीं लिखा है ओह, इन्होंने सॉरी सर. कह रहे हो आप फ्रॉम द बैटरी. मैं नीचे वाला मोबाइल फोन पढ़ रहा था. फ्रॉम द हाँ बैटरी इज इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट, स्टेट टू यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द मोबाइल फोन. मोबाइल फोन में आएगा लाइट, साउंड एंड और क्या हो सकता है? रेडियो वेव्स
etc. When the battery is in use, the average current is given, I is given. Determine the charge that passes through the battery in this much time. You know the formula of current, I equals Q over T. So Q equals IT. I is the current, which is 1.3 milli. Milli mean 10 power minus 3. And the time is 2 minutes, which is 60 seconds. जी So basically, this question is from electricity. जी चेक करें. सर मैं कर रहा हूँ सर 1.3 0.156 0.156. So this is 0.2. Yeah, 0.16. Sorry, 0.16. And the unit of charge is कोलम coulomb. Okay. point A student estimates the thermal energy produced in the battery when the mobile phone is used and uses this value to estimate the efficiency of the battery. He measures a temperature rise of 5 degree within the battery in a period of time when the useful energy output of the battery is energy is given, temperature is given. Next, the mass of the battery is given but in grams. The specific heat capacity is given but in kg. So we should have to जी convert them into kg as well. 110 10 हम्म raised to power minus 3 kg. Calculate the thermal energy needed to raise the temperature of the battery by 5 degree. So change in temperature is 5 degree. So this will be the जी delta theta. We know that Q equals mc delta theta or delta t. Next is जी Q is the energy, m is the mass. Mass is 110 10 raised to power minus 3. 110 10 raised to power minus 3. T is 830 and change in temperature is 5. Because ये लिखा हुआ है by सर 5 फोर degree. फाइव सिक्स पॉइंट 456.5 456.5. जी 456.5. So this is 460 joules. समझ आ रही है? जी सर Next, state what is meant by efficiency. Efficiency क्या होती है? The ratio of so ratio useful of energy, useful energy output over input ratio of useful useful energy output to the total energy input input. The ratio of useful energy output to the total energy. Calculate the efficiency of the battery. How to find the efficiency? Efficiency is the ratio of energy output over input multiply by 100. सही है ना? जी Okay. Now input energy is uh, the sorry output energy is calculate the thermal energy needed to raise the temperature of the battery. जी इसमें अब जरा चेक करें. Output energy is 5200. ठीक है. जी And the input energy is output energy is 5200.
में लिखते हैं 50 100 over input energy is how much the input energy. Some energy is get from the when it is heated. Hmm, यहाँ पे क्या है? When the useful energy output of the battery is 5200 and input is 460 plus 5200. 460 plus 50 check करो multiply by 100. 5200 over 460 plus 5200. 91.87. 91.87 90%. 2%. अब चेक करें why we add 460 plus 5200. सर ये आपको पता है सर. ये देखें ना यहाँ पे क्या लिखा है अच्छा क्योंकि ये स्टूडेंट भी थर्मल एनर्जी आउट इनपुट ही है. thermal energy is provided. Calculate the thermal energy needed or जी required to raise the temperature. और ये भी एनर्जी जो है वो आप बैटरी से ले रहे हैं ठीक है he measures the जी temperature rise of 5 degree within the battery in a period when useful output energy so already they have a 5200 joules of energy and extra energy to raise the temperature is 460 total energy input is क्योंकि उसको चलाने के लिए तो 52 चाहिए और some energy is lost due to the in form of heat energy so total energy is this ऐसे मैं लिख देता हूँ input is 460 plus and output is just 5200 some is 460 is lost as a heat energy so 92% is the so just and explain one reason why the value for the efficiency calculated in 3 larger than the actual efficiency of the battery. One reason why the value for the efficiency calculated in 3 is larger than the actual efficiency of the battery was 2 marks का है ना ये जी बच्चे कहते हैं कि सर since we are क्यों सर. क्वेश्चन को जरा देखें explain one reason why the value Why the for the value of the efficiency efficiency is calculated in greater. one part and three part is larger कहते हैं ये 92 नहीं होती इससे कम होती 92 is larger than the actual efficiency of the battery because energy is lost thermal energy is lost from battery to the surrounding as well thermal energy the heat energy is lost from battery to the the surrounding या environment और इसके अलावा and heat produce and heat produces is larger than 460 से ज़्यादा भी एनर्जी हो सकती है ठीक है ना 460 से ज़्यादा भी एनर्जी हो सकती है ये चाहिए हो ये तो बिल्कुल आइडियल केस है ना
एनी कंफ्यूजन? नो सर। काफ़ी है आज के लिए। जी सर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।